Yeah, am I audible? आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? Sir, volumetric analysis. बस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस डिस्कस की थी और कुछ? नहीं सर, वही चल रहा था। अच्छा, इंडिकेटर्स शुरू हो गया था। इंडिकेटर्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या चीज चल रही थी ये मैं जानना चाह रहा हूँ। Acid base titration. बस एसिड बेस टाइट्रेशन डिस्कस हुआ था, इंडिकेटर्स Yes, नहीं हुआ sir. था। Sir, No, indicator sir. start करना था. इंडिकेटर स्टार्ट करना था। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is the indicator. Yes, So sir. let's start. 10 minute हम already delay हैं. So we have discussed about the acid base titration. That was the first titration, right? So in acid base titration we have studied 4 type of titrations. That were क्या क्या थे? हाँ? क्या क्या titration थे acid base में जो हमने पढ़ा है? So strong acid, strong base, Strong base, weak base, Strong base, or weak base, Weak base, weak weak acid. acid. Strong base, weak acid. weak Okay, acid. okay, okay. That was strong. titration, back titration, complex titration. एसिड बेस में ये नहीं आया ना, ये तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। मैंने पूछा एसिड बेस टाइट्रेशन में आपने क्या क्या HCl पढ़ा? plus NaOH, HCl plus Na2CO3. अरे हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड एंड वीक एसिड विद वीक बेस। ये 4 टाइप ऑफ टाइट्रेशन हमने स्टडी की थी ना लास्ट क्लास में। Yes, sir. याद है कुछ? Yes, sir. ये है ना? चलो। हाँ, sir. Now for all these of titration there is requirement of a specific indicators, right, to know the end point of the titration. Now the questions come, what is an indicator? So an indicator is a substance that is used to determine the end point in a titration, right? In acid base titration the organic substances such as generally they are weak acid or weak base are generally used as indicator. So indicator are those substances which indicate the end point of a titration in an acid base indicator, and generally they are a weak acid or a weak base, and they generally shows a color change with certain pH range. For example, here is a list of different indicators and its pH range and its color changes from with respect to change in the pH. For example, if you are taking methyl orange, the pH range is from 3.2 to 4.5 and the color changes from pink to yellow. Similarly, for the methyl red, the pH range is from 4.4 to 6.5 and the color changes from red to yellow. For litmus, the pH range is 5.5 to 6.5 and the color changes from red to blue. Phenol red, the pH range is 6.8 to 8.4 and the color changes from yellow to red. And for phenolphthalein, the pH range is 8.3 to 10.5 and the color change is from colorless to pink. So these specific indicators have different color in different pH. Right? Clear everyone? So when somebody when it has been asked what is an indicator, so you say that indicators is a substance that is used to determine the end point in a titration. Generally, they are used for the acid-base titration, and they are the organic substances, generally the weak acid and weak bases, and which shows a color change with certain change in pH. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now the questions come, why these indicators change the color with change in the pH, right? We have said that indicators, in the properties of indicator is that it changes color with change in the pH. Now, why they show a change in color when there is a change in pH? So for these 2 theories were proposed to explain why there is a color change in the indicators. So first theory was the Ostwald theory and second is the Quinonoid theory. These both theories explain why an acid-base indicator change the color with change in pH. So first we will discuss the Ostwald theory. Now, Ostwald has suggested that the indicators, for example, methyl orange, phenolphthalein, these indicators exist in 2 forms, that is an ionized form and an unionized form. And both these forms, the ionized form and the unionized forms, have different color in different solutions. Right? So if you are taking an example of phenolphthalein, that is HPH, right? HPH. So this is an ionized form, and in ionized form it exists in H plus and PS negative.
The unionized form is colorless, while as the ionized form is pink in color. So according to the Ostwald theory, the color change is due to the ionization of the acid-base indicator. The unionized form has different color, while the ionized form has a different color. And the ionization of the indicator is largely affected in acid and bases, as it is either a weak acid or a weak base. And in case the indicator is a weak acid, its ionization is very much low in acid due to common H plus ion, while it is fairly ionized in alkali. So when we are considering an example of HPS, that is phenolphthalein indicator. In exam, अगर आप HPH लिख रहे हो तो आप नीचे बताओगे what HPH represent. That is phenolphthalein. So you will see that HPH is the ionized form, unionized form, and it is colorless. Where it is ionized form, it's turned to H plus and PS negative. That is pink in color, right? Now, if we add a acid into the solution, right? If we add acid into the solution, then the ionization of HPH will not be possible, right? If you are adding an acid into solution, the ionization of HPH will not be possible. Why? Yes, anyone? Sir, Leach-Cartier principle. Backwards direction. Yeah. Reaction will move in backwards direction. Reaction will move in backward direction because of common ion effect. The H plus concentration will be more in the solution, right? So it will be in the backward direction. It means the HPH will exist in the unionized form. So it will remain Unionized. colorless. It will remain colorless because of the common because of the presence of the H plus ion. It will remain colorless, right? And when we add a base into the solution, it will form, the base will form, OH molecule will form, OH will form water molecule with the H plus, and the molecule will exist in the ionized form, and the solution will turn pink in color. Clear? Yes. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Why phenolphthalein Yes, is so Yes, pink sir. color in basic medium and it is colorless in acidic medium? So you can say that due to common ion effect, when we add acid into the solution, due to common ion effect, the HPH exists in unionized form, so it is colorless, while in presence of basic medium, the H plus ions react with the OS, resulting in the formation of water molecule, and there is a color change to pink color. Clear, everyone? So the Ostwald theory suggests that the indicator exists in two forms, that is ionized form and unionized form, and both the forms have different color in different solution. So first example, we have discussed that HPH exists in two forms, that is unionized form and an ionized form. The unionized form is colorless, whereas the ionized form is pink in color. So when we add an acid into the indicator, then it will remain colorless due to common ion effect, and when we add a base into the indicator, it will turn pink in color. Now, second example is, for example, you can see that when it is unionized form, the pH is 7, it is colorless, whereas when we add a base into solution, the color changes to light pink, that is at pH 10, and you will see a pink in color. Now, taking another example, that is a methyl orange, that is a weak base, and it can be represented as MEOH, methyl orange, methyl and OH group is there, right? So it is a weak base. So this is an unionized form, and the ionized form is Me plus and OH negative. Negative is missing right here. So I'll just put a negative sign here. OH negative. That's right. So OH negative. Now, if we add an acid into solution, what will happen? If the medium is acidic, suppose I'm saying the medium is acidic, what will happen? Yes, So OH minus ion will get neutralized. if the medium is acidic, then MEOH will exist in ionized form. MEOH will be ionized, right? Yes, sir. So it will exist in Me plus and OH negative, and OH negative will react with H plus, resulting in one of the water molecules, and so the color of the indicator will be red color. Clear? And if we Yes, sir. add, if the medium is basic, then It the will indicator exists in exist in unionized form, and the color of the solution will be yellow color. Right? So Ostwald, it will be unaffected, or we can say that if the medium is basic, it will be yellow in color, and if the medium is acidic, it will be red in color. Yes, clear?
Yes, sir. Yes, sir. So we can say Yes, that Yes, sir. phenolphthalein and methyl orange both can be used for both are being used for acid base titration, right? So I'm saying for which type of acid base titration phenolphthalein can't be used? Yes, my question is for which type of titration phenolphthalein, which type of acid base titration phenolphthalein can't be used? Strong acid, weak base. Strong acid, weak base. Strong acid, weak base. So strong phenolphthalein acid, weak base. cannot be used Strong for a acid, weak base, sir. titration of strong acid with weak base. Why? H प्लस का डिसोसिएशन ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में और फिर वो कलरलेस ही रह जाएगा. H प्लस का डिसोसिएशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो? नहीं होगा. तो मतलब एसिड का जो H प्लस होगा, एसिड का जो H प्लस है. So due to common ion effect, it will remain in the undissociated form, so it will remain colorless in presence of strong acid and weak base. So phenolphthalein are not a good indicator for strong acid and a weak base titration. And methyl orange? Weak It acid, can strong be base. used in both. Strong base and weak acid. So phenolphthalein cannot be used for titrating a weak base against a strong acid, and methyl orange cannot be used as a suitable indicate for titration of weak acid with a strong base. Clear, everyone? Yes, sir. That was the first theory, Yes, sir. Ostwald theory. Ostwald theory. What it suggested? Ostwald theory has suggested what it says. Yes, anyone? Indicators are acids or base, weak acids, and they impart color in unionized form. In ionized form. Yes, anyone else wants to add something? Color change of indicators is due to ionization of the indicators. No. Actually, the indicator exists in two forms, that is ionized and unionized form, and both have different color in different solutions, right? So, आप एक बार slides देखोगे आपको ये clear हो जाएगा. Now, there were some limitations, some problems. If I am saying that another theory was proposed, it means there must be limitations to the previous theory, right? Or the previous theory was not able to explain something, right? So another theory was proposed to explain the change of color in indicators, and that is known as the Curenoid theory or the structural theory. Curenoid theory or the structural theory. This theory suggests that the indicator exists in two forms, that is a benzonoid form. You can see that this is a benzene-like structure, right? And exists in two forms, and the second is a quinonoid-like structure. This is quinonoid-like structure. Both the structures are visible to you? Yes? Yes, sir. Yes, sir. So according to the quinonoid theory, the indicator exists in two forms, that is a benzenoid form and a quinonoid form, and both are tautomeric form to each other, right? Both are tautomeric forms to each other, and both these forms have different color in different medium. Clear? So one form exists in acidic medium and the other in alkaline medium. Thus, during the titration, from medium changes from acidic to alkaline or vice versa, and this change in the pH converts the one form, that is the benzenoid form, into the quinonoid form, or the quinonoid form into the benzenoid form. Clear, everyone? So क्यूनॉइड थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन हुआ कि जो हमारा इंडिकेटर्स होते हैं वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? दैट इज वन इन द बेंजोनॉइड फॉर्म एंड अदर इन द क्यूनोनॉइड फॉर्म, एंड दीज बोथ फॉर्म्स हैव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सॉल्यूशंस. क्लियर? आप ये देख रहे होगे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, और ये क्यूनोन लाइक स्ट्रक्चर है. यस सर. सर एसिडिक और अल्कलाइन में कौन सा होता है? क्या एसिड और अल्कलाइन में क्या क्या होता है अभी बता रहा हूँ, आगे आता हूँ ना, आगे बताऊंगा, स्पेसिफिक एग्जांपल लेके बताऊंगा ना आपको. ठीक है? नाउ विल डिस्कस द केस ऑफ phenolphthalein, राइट? सो यू विल सी दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ phenolphthalein. दिस इज benzonoid form of phenolphthalein. You will see that benzene like structure is there, right? It is visible to you? The screen is visible to you? Yes sir. You will see that the phenolphthalein, this is a benzoid like structure. So in presence of basic medium, what will happen? If the medium is basic, the OH will abstract this H plus, and there will be delocalization of the negative charge, resulting in the conversion of the structure to quinonoid form, right? Now when this structure turns into quinonoid form, it turns into pink in color, and this pink color exists in basic medium while it is colorless in acidic medium. Why? Because
of the abstraction of this plus and delocalization of the negative charge take place in the ring, and due to this there is conversion of this benzoate into this quinoid form. You will see that this is the quinoid structure now, right? So when it is quinoid structure, it turns into pink color. So we can say that the phenolphthalein shows pink. Phenolphthalein shows pink color in basic medium because it is in quinoid form, and it shows colorless in acidic medium as it is in the benzoate form, right? और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोप्थलीन और ड्रॉ द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फिनोप्थलीन, और what is the quinoid or what is the structure of phenolphthalein in basic medium and what is the structure of phenolphthalein in acidic medium. Clear everyone? समझ में आ गया आपको ये स्ट्रक्चर? Yes, sir. कि बेंजोनाइड फॉर्म में ये क्यों है? अच्छा, माय क्वेश्चन इज क्विनोइड फॉर्म में ऐसा क्या हुआ कि वो कलर अब पिंक कलर हो गया, ये बताओ. Why it turns pink in color in the quinoid form? सर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. हाँ, एक आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. चलो और बताओ. सर OH माइनस प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन जैसे O पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो शायद से लाइट का कुछ इससे सीन अच्छा, होगा. आप अगर देखोगे क्यूनॉइड फॉर्म को एक बार देखो जरा, इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों रिंग में है ना? अगर ये देखें तो पूरे रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो पूरे कंजुगेशन में है कि नहीं है? यस सर, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके डीलोकलाइज होंगे, जिससे हाँ, तीनों रिंग में एग्जैक्टली. और ये फर्स्ट आपके बेंजॉइड में देखोगे तो बस सिंगल सिंगल रिंग में है, वो एक दूसरे से उसमें कंजुगेशन में नहीं है ये रिंग, है ना? हाँ सर, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब से कलर का क्या रिलेशन है? एनर्जी जब रिलीज करते हैं तो कलर रिलीज होता है. हाँ, कलरिंग पार्ट करता है. ये आप जब नेक्स्ट यूनिट में जाओगे, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, यूनिट 3, तो वहां हम डिस्कस करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और इसके उसके बेस पे वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल आई मे आस्क मार्क ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर दैट यू विल स्टडी इन यूवी विजिबल इन फिनोप्थलीन. तो उसके लिए आपको क्या याद होना पड़ेगा? फिनोप्थलीन के दोनों स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे और वो याद होने पड़ेंगे. इवन इन द प्रैक्टिकल फाइल यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ phenolphthalein both form, that is the benzonoid and the quinoid form. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो मिथाइल ऑरेंज भी डिस्कस करते हैं. सो मिथाइल ऑरेंज, this one is which form? This one जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है अपना, this one is Benzonoid. why it is benzonoid form? Why it is benzonoid? Unionized. Because it is showing benzene like structure. This is benzonoid, right? So in benzonoid structure, it is yellow in color. When we add an acid when the medium is acidic, it turns into quinoid form. Clear everyone? It turns into quinoid and it shows pink, or we can say that it is red in color, right? Not pink, it is red in color. Clear? So methyl orange show yellow color. Yellow color when it is in the benzonoid form, and it turns into pink color when it is in quinoid form in presence of acidic medium. Clear everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So again you have to practice the structure of both phenolphthalein and methyl orange, and you have to clearly mark that this is a benzonoid structure and this is a quinoid structure, that is a quinone like structure. And what is the color change? That is yellow in color when it is benzonoid, and it is red in color when it is in quinoid form. So this was explained by the quinoid theory, which says that the indicator exists in two forms: tautomeric form, that is the benzonoid form, and a quinoid form. And these two forms have different color in different solutions. And the color change is due to the conversion of one tautomeric form to another tautomeric form. Clear everyone? Yes, sir. Now the question is, why there was a need for a quinoid theory? Why there was a need of a quinoid theory? Or I can say that, what are the limitations of Ostwald theory? Or why quinoid theory was proposed? Yes, anyone? नो सर. No sir means कुछ भी आइडिया, कुछ भी नहीं सोचो सर. जरा. क्यों, ऐसा क्या है इस थ्योरी में, क्या अलग हो गया, जरा बताओ. So probably this theory explains the color of the indicator.
सर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंडिकेटर में भी आयनाइज होता हो और कोई बिना आयनाइज हुए भी कलर चेंज देता हो. Exactly. One limitation is that Ostwald theory was not able to explain the color change based on the ionized and unionized form for all the indicators, right? In many indicators, that theory was not applicable, right? और एक लिमिटेशन बताओ. एक लिमिटेशन क्या था कि जो हमारा ऑस्टवॉल थ्योरी only says that the color change is due to the ionization of the indicator, but why there was a color change it was not able to explain, है ना. उसने बोला कि आयनाइज होगा तो ये कलर होगा, लेकिन कलर चेंज क्यों होगा ये it was not able to explain. So that was explained by the structural theory, and it says that color change is due to the change in the structure of the indicator. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. कि जो भी आपका कलर चेंज हो रहा है वो स्ट्रक्चर के चेंज से हो रहा है, लेकिन ऑस्टवाल ने कहा था कि ठीक आयनाइज फॉर्म में ये कलर होगा और अनआयनाइज में ये होगा, बट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई देयर वाज अ कलर चेंज, एंड दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द ऑस्टवाल. सॉरी सर, और सर पहला रीजन क्या था? पहला रीजन अभी बताया किसने, बताओ क्या, फिर से जिसने बताया था फिर से उसको बताओ. पहला रीजन क्या था कि जो आयनाइज्ड और बोलो. यस, रीजन ये था कि जरूरी नहीं है कि हर इंडिकेटर मतलब आयोनाइज हो रहा हो पर फिर भी कलर देते हैं. हाँ, it means the Ostwald theory was not able to explain for all the indicators. It was not able to explain the color change for all the indicators, right? कि हर indicators ऐसा, there was some exception that some indicators ionized और unionized के बिना भी color change दे रहे हैं. ये explain Ostwald theory नहीं कर पा रही थी. It was not fitted for, or it was not suitable for all the indicators. That theory was not suitable for all the indicators. Therefore, there was need for a structural theory. सर, हाँ जी. सर मतलब जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उन सब में बेंजीन रिंग होती है. ऑलमोस्ट हो गया. आपको दो तो दिखाई दिया मैंने, तीसरा आप यूज करोगे ईबीटी, इराइक्रोम ब्लैक टी, वहां भी आपको बेंजीन रिंग दिखेगी, है ना. और यूज करोगे स्टार्च में भी आपको मिलेगा, है ना. अच्छा. तो ये दोनों थ्योरी के बेस पे ही इंडिकेटर का कलर चेंज एक्सप्लेन हुआ है. दोनों थ्योरी को क्या होती है? हल्दी टर्मरिक बोलते हैं उसको, हल्दी. हाँ सर, वो उसमें भी बेंजीन रिंग होती है. आप सर्च करो स्ट्रक्चर उसका. अच्छा. और ये रिलेट करो, ये जरा देखो कि कलर से किसी भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन है. ठीक है, चलो. थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्लियर? बेंजीन रिंग है, आप चेक कर लो. है बेंजीन रिंग ना? हाँ सर, है. ठीक है. यस, एनी मोर क्वेश्चन इन दिस थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स? No, sir. So next, so this is all about the acid-base titration. Acid-base titration, we have discussed what is an acid-base titration, what are the different type of acid-base titration, what are the different titration curve for different type of acid-base titration. Then we have discussed what are indicators and theory of indicators. In theory of indicators, we have discussed the Ostwald theory, and the second one was what theory? Phenanoid theory. Structural theory, right? Now, next type of titration is oxidation reduction titration, right? So, when you are saying that oxidation reduction titration, it means it is also called as redox titration. Redox, it means the reduction and oxidation. So, reduction and oxidation, or we can say that oxidation followed by reduction. This type of titration are known as oxidation and reduction titration. And the chemical reaction proceed with transfer of electron. Transfer of electron means either there is a gain of electron or there is a loss of electron. So what is oxidation? What is oxidation? Lose of electron. Loss of electrons. Loss of electrons. Reduction is Gain of electron. So during this type of titration, either there is a gain of electron or there is a loss of electron. And these type of titration are named on the basis of the reagent used. जो उसमें reagent यूज किए जाते हैं उसके बेसिस पे इसका नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज द परमैग्नेट टाइट्रेशन.
permanganate titration. In this titration, you use potassium permanganate as an oxidizing agent in acidic medium, right? So you use potassium permanganate and the medium is maintained acidic. Why the medium is maintained acidic? Anyone? So to facilitate the ionization. Yes. To facilitate the ionization, the medium is maintained acidic, and it is maintained acidic by the use of dilute sulfuric acid. And in this type of titration, in permanganate titration, potassium permanganate acts as a self-indicator. Now, what is a self-indicator? A colored substance is known as a self-indicator. The color substances? Yes, anyone? So जो खुद Sir, oxidize it changes its. So जो Where खुद substance oxidize shows indication after the change in pH. When one of the analyte or the titrant itself act as an indicator, then it is known as self-indicator. या तो आप जो titrant ले रहे हो, है ना, ग्लास ऑयल में, आप conical flask में, या फिर जो analyte ले रहे हो, या फिर जो आप titrant ले रहे हो, दोनों ही अगर एज ए इंडिकेटर की तरह यूज हो रहा है, वो इंडिकेटर का भी काम कर रहे हैं, वो भी कलर चेंज कर रहे हैं, तो इट मींस दे आर नोन एज सेल्फ इंडिकेटर. A very good example of self indicator is potassium permanganate. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One more term is there, that is internal indicator. What are internal indicators? Yes, what are internal indicators? And what are external indicators? Yes, anyone? No idea, sir. No idea. Okay. Internal indicators are in those which, indicators which are added in the solution to know the end point of the titration. For example, internal indicators are the indicator that Methyl are orange. methyl orange, starch. These are internal indicators, right? They are being added in the solution to see the end point of the titration. And what are external indicators? नहीं पता सर. सर जो एक्सटर्नली डाले जाते हैं. Externally डाले जाते हैं मतलब? सर जो रिएक्टेंट्स में involve करते हैं. These are those indicators, right? इसको हम क्या करते हैं कि जब भी हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो वहां से हम सोल्यूशन लेके बाहर ले जाकर उसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या वो आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है. फॉर एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड्स, दे आर बीइंग यूज्ड एन एक्सटर्नल इंडिकेटर. लिटमस पेपर, लिटमस जो है वो भी एक्सटर्नल इंडिकेटर है आपका, है ना. आप क्या करते हो, सोल्यूशन रिएक्शन करते हो, फिर उसको रिएक्शन डाल के देखते हो हुआ या नहीं हुआ. That is an external indicator. So you have there are three type of indicator, that is external indicator, internal indicator and a self indicator. Clear everyone? बात आई समझ में सबके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now when we are dealing with a potassium permanganate, then permanganate titration, the potassium permanganate act as an oxidizing agent, and the reaction is 2KMnO4 plus 3H2SO4 giving K2SO4 plus 2MnOSO4 plus 3H2O plus 5 of oxidation state. That is, and this is the ionic reaction. That is the ionic reaction governing the potassium permanganate titration. Now, when we are doing the titration, right? When we are doing the permanganate titration, you are taking the KMnO4 in the burette. You are taking the KMnO4 in the burette. And if you want to analyze, for example, if you want to estimate the ferrous salt, you are taking in the conical flask, right? You are taking in a titrating flask. You are taking a ferrous salt or aqueous solution of the ferrous salt. Now, before the end point, I am saying that before the end point, the solution of the solution that is in the conical flask consisting of the ferrous salt is colorless, right? Before the end point, the solution is colorless. When you add an excess drop of KMnO4 after the equivalence point, it will turn pink in color, right? अब जैसे ही equivalence point के बाद आप excess कोई भी KMnO4 डालोगे तो जो आपका नीचे solution है वो there it will impart pink in color,
and this pink color will show that this is the end point of the titration. So here the KMNO4 will act as a self indicator. Clear? Yes? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. So potassium permanganate potassium permanganate is used for the estimation of ferrous salts, oxalic acid, oxalates, hydrogen peroxide, and others. Right? Now, before this titration, potassium permanganate is always standardized before use. Right? इसको हरदम आप सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करोगे और क्यों करोगे? यस और कैसे करोगे? So my question is why there is a need for standardization? I will put a question mark here for you. Where is the yeah? Sorry. Yeah. So the potassium Sir, I'm not permanganate. sure, but maybe it is hygroscopic in nature, that why. If I'm saying potassium permanganate, it is a primary standard solution or secondary standard? Sir, I think primary standard. Yes. Anyone else? Potassium permanganate is primary standard or secondary standard? Sir, secondary standard. क्यों? Sir, primary. क्यों? Sir, if it's being standardized before used every time, then isn't it secondary? If it required standardized before use, then it is Secondary. secondary, not primary standard, right? So it is not a primary standard, it is a secondary standard solution because it needs standardization before use. So what should be the primary standard for that? What is the corresponding primary standard for potassium permanganate? आपको जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बताया गया था मैंने बोला था आपको ऑक्सैलिक एसिड था सर स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको ना ऐसे याद करने पड़ेंगे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उसके सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे ठीक है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे एटलीस्ट 4 to 5 एग्जांपल्स ठीक है सर केएचपी था हाँ केएचपी हाँ जी बोलिए केएचपी था हाँ हो सकता है हाँ ये मैंने बोला आप पता करो मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क लिखा है कि आप KMNO4 को अगर करना हो स्टैंडर्डाइज तो कैसे करोगे हाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया आपके नेक्स्ट क्लास में इसलिए लगा दिया कि मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा तो मुझे याद रहेगा मुझे आपसे पूछना है ना जो बता देगा वो 1 नंबर 15 में से 1 नंबर मिल जाएंगे उसको सबने बता दिया तो सबके 1 नंबर ठीक है चलो second type of titration redox titration is dichromate titration. In dichromate titration potassium dichromate is used as an oxidizing agent in acidic medium and the medium is maintained acidic by the use of dilute sulfuric acid and the reaction is K2Cr2O7 plus 4H2SO4 giving K2Cr2SO4 whole thrice plus 4H2O plus 3O, right? The ionic reaction is shown here in the screen. Now the solution of potassium dichromate can be directly used for titration. It is not potassium dichromate is not used as a self indicator. It is directly used for the titration. It is directly used for the titration. It means what? It's a self indicator. No, it is not. When you are using it directly, what does it mean? It means you are not standardizing Primary standard. It is a primary standard. So you are not standardizing potassium permanganate. It means it is a primary standard because its solution is stable, right? Yes, So sir. yeah, you can directly use potassium dichromate. It does not require any standardization, right? So it is mainly used for the estimation of ferrous salt and iodides. So if you are titrating K2Cr2O7 with ferrous salt, suppose I want to estimate the presence of ferrous salt using chromate titration, then either I will use an external indicator that is a potassium ferricyanide or an internal indicator like diphenylamine are being used for the estimation of ferrous salt using dichromate titration. This is a specific example
where you can use either a ferrous salt as an external indicator or diphenylamine as an internal indicator. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any doubt? Any question? No, sir. No No, question. समझ में आ रहा है ना सबको? बस 2-3 लोगों के ही मुझे आंसर मिल रहे हैं, बाकी पूरे के पूरे 50 सो रहे हैं, 65 सो रहे हैं। ऐसा क्यों? Let me check specifically with Rohan Rana. Rohan Rana. He is absent, I think. Rohan Rana is absent. Mohit Raj. Mohit Raj is also absent. Kunal Bahel. Yes, sir. Bagela, sir. Baghel, yeah, Baghel. Darshan Verma. Yes, sir. You are there, yeah. मैंने आवाज, हाँ. आर्यन चिकारा. Yes, sir. यश चंद्रा. Yes, sir. हाँ, अभी मैं क्या पढ़ा रहा था यश? सर आप वो K2MnO4 पढ़ा रहे थे सर, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पढ़ाता है. K2MnO4 क्या होता प्राइमरी है? सॉल्यूशन K2MnO4 क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। हाँ, क्या हो रहा था? मैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या कर रहा था? सर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो। अच्छा यार, हाँ चलो, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। कौन सा स्टैंडर्ड होता है? कौन सा स्टैंडर्ड होता है? तो मेरा क्वेश्चन फिर से आएगा, व्हाट आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस? हाँ, यतिन आहूजा बताएंगे व्हाट आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। व्हाट आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? सर जिसकी कंसेंट्रेशन प्रिसाइसली हमें पता होती है। ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की? इसीलिए आप ना क्लास के बाद पढ़ते नहीं हो। चलो, लेक्चर नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, प्रेजेंटेशन भी आप सबको मिल जाएगी, है ना? आप जस्ट पास होने के लिए नहीं पढ़ो, एक बार देखो उसको, एक बार चीजों को समझो, याद रखो चीजों को, है ना? आप पास होना है उसके लिए आपको मिल जाएगा, पूरा मटेरियल है, आपको सब मिल जाएगा, बट एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर द थिंग्स। बिकॉज क्या होगा, थ्योरी में चलो आप रट्टा मार के लिख दोगे, जब आपसे वाइवा में पूछा जाता है या फिर असाइनमेंट में कभी पूछा जाएगा, आप वहाँ पे 0 हो जाते हो। तो क्या होता है, प्रैक्टिकल के नंबर आपके 0 हो जाते हैं। आपको लगता है प्रैक्टिकल के फाइल में हम सब लिख देंगे तो नंबर मिल जाता है, नहीं, वाइवा के नंबर आपके खत्म हो जाते हैं। और वाइवा Sir, I've searched the answer for that question. For which question? So how can we standardize potassium manganate solution? कैसे करते हैं? गूगल करते So हैं? yes sir. So by adding ammonium iron to sulfate crystals. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मेरे लिए नेक्स्ट क्लास में, बाकी लोग भी एक बार सर्च करेंगे और बाकी लोग भी आप पता करके बताएंगे, है ना? सर मैं भी बोलूं? हाँ, बोल लो। एसिड से ऑक्सैलिक एसिड से स्टैंडर्डाइज करा सकते हैं। हाँ, एक वे ये भी है, और सोडियम ऑक्सीलेट से भी है। हाँ सर चलो, ये होता कैसे स्टैंडर्डाइज इन सब हाँ एग्जैक्टली, मेरा क्वेश्चन यही था कि आप ये प्रोसेस देखो कि ये जनरली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप एक बार देखना, सर्च करना कि कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन। सर वो जो क्रिस्टल्स होते हैं सर, वो रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, मतलब सॉलिड क्रिस्टल्स की तरह रहते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। एग्जैक्टली, हाँ। So next type of titration in redox titration is iodimetric and iodometric titration, right? So when we are saying that iodimetric and iodometric titration, it means there is involvement of iodine. So we can say that the reduction of free iodine in iodimetric and iodometric titration, there is reduction of the free iodine to iodide ion and oxidation of iodide ions to free occur in this type of titration. So I2 plus 2 electrons giving 2I negative, that is the reduction, and 2I negative to I2 plus 2E giving oxidation. So in iodometric and iodometric titration, it involves the reduction of free iodine to iodide ions and iodide ions to free iodine occur in this type of titration. So first is the iodimetric titration.
So these are the titration in which the free iodine is used. In which the free iodine is used. Now the problem is you can't prepare a solution of iodine in water because it is volatile and less stable in water. So the solution of iodine is prepared in potassium iodide, right? So Ki plus I2 giving potassium triiodide. So in iodometric titration, the iodine is directly used for titration. And before the titration, the solution is first standardized with the standard solution of I2. Substance such as sulfide, thiosulfate, arsenite, etc. are estimated using this type of titration. Right? This is iodometric titration. Second is iodometric titration. मतलब हाँ क्या है? वो पिछले कहा था ना सब्सटेंस लाइक सल्फाइड्स थायोसल्फेट आर्सेनाइट आर एस्टिमेटेड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से आप इनकी एस्टिमेशन कर सकते हो, टाइट्रेशन कर सकते हो, टाइट्रेशन करके इनकी एस्टिमेशन कर सकते हो। सल्फाइड डिटेक्ट कर सकते हो, थायोसल्फेट, आर्सेनाइट ये कितना है, ये प्रेजेंस आप इसको पता कर सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले में हमने बात किया था फेरस सॉल्ट एस्टिमेशन आप कर सकते हो किससे, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन से या पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन से, है ना। और एसिड बेस टाइट्रेशन से क्या पता कर लोगे? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ्स पता कर सकते हो, है ना। सो these can be used for the estimation of sulfide, thiosulfide, arsenite, etc. Now second is iodometric titration. In iodometric titration, an oxidizing agent is allowed to react in neutral medium or in acidic medium with excess of potassium iodide to liberate free iodine. So in iodometric titration, there is involvement of an oxidizing agent. So the Ki react with an oxidizing agent resulting in the formation of I2, and this free iodine is titrated against a standard reducing agent, usually with sodium thiosulfate. So we can say that it is a two-step process. First step is the reaction of the potassium iodide with an oxidizing agent resulting in the formation of I2, and the second step is the titration of the free iodine with a standard reducing agent. So iodometric titration can be used for the estimation of halogens, oxyhalogens, dichromate, cupric ions. Practical is there, one practical is there where you have to estimate the presence of copper ions in given water sample, or oxide, etc. can be estimated using this method. And the reactions, some examples for iodometric titrations are shown on your screen. So basically, when you are iodometric and iodometric titrations, iodometric titration is a one-step process, whereas iodometric titration is a two-step process. In iodometric titration, I2 is directly used, whereas in iodometric titration, the potassium iodide is first react with the oxidizing agent, and the produced I2 is then reduced using a sodium thiosulfate solution. So what is the main difference? What are the main difference between an iodometric and iodometric titration is shown on your screen that I will provide to you. What is the main difference? That is, one is a direct method, another is an indirect method. One method is used for analyzing strong reducing species, whereas other is used for analyzing strong oxidizing species. Titration, it is done in, for iodometric titration is done in acidic or weakly alkaline solution, whereas there is addition of oxidizing agent is needed for iodometric titration. Now for both these type of titration, for both this iodometric and iodometric titration, the indicator uses starch indicator, right? The indicator uses starch. So what is the color of the starch? Yes, what is the color of the starch? So brownish color is there. Brown color is not, it is not brown color. Whitish. White. It is blue or violet color. Blue or violet. Bluish, violet color. Or violet color. So if in a solution when you put a starch, right, it will turn what? It will turn blue color, right? So at the end point, it will turn into what color? Blue-black color. Blue is already it is present, right? It is in a blue color. When in presence of iodine, it's so blue color, right? So that is before the titration. At the end point of titration, the color change will be Deep blue. Orange. it will be blue. और कोई color white Brown. एक सेकंड, व्हाइट ब्लू कौन सा कलर होता है? Brown.
it will turn colorless. The blue color will disappear. The solution will be milky, right? The blue color will disappear at the end point, right? So in this, starch is used as an indicator which shows blue color, and at the end of the titration, it will turn colorless, or you will say a milky color will be there. Clear? सर ये थोड़ा रिपीट कर दो, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया ये. हाँ, आप जब भी टाइट्रेशन करोगे, फॉर एग्जांपल वन प्रैक्टिकल इज देयर, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैट प्रैक्टिकल, राइट? फॉर द एस्टिमेशन ऑफ cuprous ion, right? For that you will take cupric water sample consist of that cupric salt. In that you will add iodine and starch solution to it, right? Okay. Yes, when you add starch solution to the ion starch to the solution, it will turn blue in color, right? Then yes, you will titrate it using sodium thiosulfate. So before the titration it was blue in color, right? When you start titrating after the end point, or sorry, after the equivalence point or at the end point, it will turn colorless. That is the end point of the titration. You will note down the volume, and from that you will estimate the presence of the copper ion by using calculations. Clear? No? Yes, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Practical is there. We will discuss. That will be more clear to you. Then it will become more clear to you. Yes. So these are the three types of titration that has been included in your redox titration. Any question? सर पीपीटी कब मिलेगी? पीपीटी आपको मैं सैटरडे या संडे को यहाँ तक की भेज दूंगा. अभी तक हुई ना. आई वाज थिंकिंग कि पूरा ये यूनिट खत्म हो जाए तब भेजूंगा, लेकिन बट आई विल सेंड अप टू हियर, राइट? सर स्टार्टिंग से ना? हाँ, स्टार्टिंग से मिलेगी आपको. जो भी मिलेगा स्टार्टिंग से मिलेगा. सर कहाँ मिलेगा ये? कहाँ मिलेगा? मैं एक ना क्लासरूम क्रिएट करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लो. मैं कल क्रिएट करता हूँ. आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग टाइम. लगातार क्लासेस हो रही है, तो यू ज्वाइन द क्लासरूम. वहाँ पे अवेलेबल होगा आपके लिए. इवन सम मोर लेक्चर मटेरियल विल आल्सो बी देयर. ठीक है सर. तो थोड़ा सा वेट करो. हम क्लासरूम क्रिएट करेंगे, आपको मेल आईडीज पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लो. उस पे अवेलेबल होगा. एंड वी कैन आल्सो डिस्कस प्रॉब्लम्स देयर, राइट? कैन यू रिकमेंड अ बुक? बुक देखो, हमने जहां से उठाई है ये है वोगल्स मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. और स्पेसिफिक इसी के लिए बुक है, लेकिन आप ऐसे अगर बुक खरीदोगे तो बहुत आपको लंबा पड़ जाएगा, है ना? तो आप सर्च करना, मेरे ख्याल से आपको अवेलेबल भी हो जाएगी फ्री इस पे इंटरनेट पे. वोगल्स की है मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके, VOGELS वोगल्स की बुक है. ठीक है, उसमें मिलेगा. और भी 2-3 बुक्स है, वहां से मैंने मटेरियल उठाया. तो इम्पोर्टेंट इज यू अटेंड द क्लास. आप क्लास करिए. आपको जितनी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी मैं आपको साथ साथ बताते रहूंगा. एंड I am saying that before sitting for the class, you should have a pen and a paper with you. At least you should note down some points. कि ये points मुझे समझ नहीं आए, ये मैं after the class पूछूंगा. ये important था. For example, I am saying that phenolphthalein cannot be used for this type of titration. Methyl orange cannot be used for this type of titration, right? What is the for acid, for weak acid and weak base titration, which indicator can be used? Or for weak acid and weak base titration, why it is not easy to titrate a weak acid against a weak base? So these are some questions that has been asked in the exam, और ये सब हम डिस्कस करते हैं और ये पॉइंट्स मिस हो जाती हैं, है ना? क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है आज की क्लास से? Any more question, doubt? No sir. कोई डाउट नहीं आप लोगों का? नो सर. ऐसा क्या समझ में आया या नहीं आया एकदम? Yes sir, समझ आया. क्लियर है सर. पढ़ेंगे तो खुद से और क्लियर हो जाएगा. आ गया सर. देखो, PDF पढ़ के और क्लियर. हाँ, पढ़ने के बाद तो और ज्यादा क्लियर होगा. ये बात फैक्ट है. ठीक है, क्योंकि जो पहले क्या है कि हम बैठते थे क्लास में तो हम चीजों को समझ पाते थे. अब क्या है, ऐसा सिचुएशन है नहीं. तो एटलीस्ट आप एक बार इसको पढ़ोगे. पढ़ने के बाद जो भी डाउट होगी यू कैन आस्क. वी विल क्रिएट ए क्लासरूम, और क्लासरूम में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर वहां पे हम डिस्कस भी कर लेंगे. ठीक है? ओके सर.
ओके तो सौरभ मुझे अटेंडेंस शीट भेज देना, मैंने वैसे स्नैपशॉट ले लिया लेकिन तुम मुझे अटेंडेंस शीट भेज देना, और मैं देखूंगा कि तुम कितना सही भेजते हो गलत भेजते हो, ठीक है? ओके सर, मैं भेज मैंने दूंगा सबके स्नैपशॉट ले लिए यहाँ से, ठीक है? So let's end for the today class. चलो, good day. Enjoy your weekend. Okay, bye. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू सर Thank you, sir. Thank you.